my problem, I tell you, see, 53 minutes. सर वेरी जो अभी डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा हुआ है, वेरी हेल्दी डिस्कशन हुआ है, स्पीकर्स ने बहुत अच्छा बोला। अगर अच्छा होगा कि जो अभी रिमेनिंग स्पीकर्स हैं उनको आप जो है 2-2 3-3 मिनट में उसको कंक्लूड करें तो बेटर होगा। Okay. No, I agree with you, but the point is both main ruling party and opposition party has taken more time. Therefore, others will also expect little more time. All right. That is the point. You have taken more time, they have also taken more time. So, see, and they will say, if I cannot control you, so now, Raja, dear Raja, I already said that, dear Raja, I gave the ruling. I am allowing you also. I said. Government. So we are all affected party. Yeah, I will allow you, don't worry. D Raja. D Raja. This is not this side or that side or the middle. It is a very important issue. This issue used to be discussed for hours, for days. D Raja. And we want a serious discussion on this. Since the discussion is progressive, that I know. Let it D Raja. That I know, I agree. D Raja. Thank you, sir. You will take 5 minutes, you agree? Okay. Thank you, sir. Okay. We are discussing a very serious political and constitutional matter. It is not an issue between BJP and Congress. It is an issue concerning our democracy, concerning our constitution. Sir, as a citizen, primarily, as a member of this House, I am extremely concerned that our democracy is at the crossroad. There are forces who have gained courage in the given situation to challenge the very constitution, to challenge the very parliamentary democracy in our country. In such a situation, we are discussing this matter. The House should give its serious thought. How can we preserve our democracy? How can we safeguard our constitution? It is nice to hear that our Prime Minister goes to US Congress and says Constitution is the holy book. But when it comes to India, the holy book is undermined and it is being questioned. That is why I say our democracy is at crossroad. Sir, you are from Kerala, and the communist government in Kerala was one of the first governments which became victims of Article 356. Sir, after that, several times Article 356 was used. Governments have been toppled, dismissed. Sir, I come to the case of Arunachal Pradesh and Uttarakhand. Sir, when Mr. Venkaiah Naidu was speaking, referring to Arunachal Pradesh and Uttarakhand, he said, it is not the last time. It is not the first time. It means it is not the last time also. He said it. So this is the situation, sir. And it is nice to hear Bhupender when he was speaking about Sabka Saath, Sabka Vikas development. But what the union government, the BJP government did in Arunachal Pradesh and Uttarakhand was to dismantle all the established practices of parliamentary democracy, constitutional practices, conventions of our country by imposing president's rule in both these states. And the government should regret, government should admit
It was a violation. It was not in accordance to the practices which have been established. When I say this practice, everybody referred to Bombay judgment, 1994 Bombay judgment, and majority of the government, of any government, should be tested on the floor of the House. Leave it to the members of the House to decide and come to certain conclusion whether that government enjoys support majority or not. That you did not allow. That is the charge against the present government, and you should regret for it. Sir, the other thing is Uttarakhand, Arunachal Pradesh are border states, very sensitive states. And why did you encourage the constitutional and political disruptions in these states? And they are very sensitive border states. And why did you encourage political and constitutional disruptions? And here I question the role of governors. How come governors became catalysts and agents to promote such constitutional political disruptions? And now time has come, we will have to discuss the role of governors, whether we need governor or not. That is one question raised by several parties. In Tamil Nadu, I know major political parties long back raised that issue. Why do we need governor? DMK raised the goat doesn't need beard and state doesn't need governor. Sir, this is one issue we need to discuss. The problem is, now everybody talks about Article 356, sir. It is now one should go, I will finish with this point, sir. That is, it is extremely important to go through the constitutional debate, to understand, to comprehend the vision of our constitution makers. Sir, it was Article 278. Actually, it was Article 278 in the draft constitution. It became Article 356 in the new constitution. Constituent Assembly discussed these articles on 3rd and 4th August 1949. And there were 14 members actively participated in the discussion. Out of 14 members who prominently participated in the discussion, 9 opposed. Even at that point of time, 9 opposed. Only 5 supported. And one member who supported, Mr. Gupte, he only said in extraordinary cases it can be used, otherwise it should remain as a dead letter. While replying to the debate, Dr. Ambedkar, while replying to the debate, stated that, I quote, sir, I quote, "In fact, I share the sentiments expressed by my honorable friend, Mr. Gupte, yesterday, that the proper thing we ought to expect is that such articles will never be called into operation and that they would remain a dead letter, a dead letter." This is Dr. Ambedkar, and we celebrate the 125th anniversary of Dr. Ambedkar. When this article was incorporated in the Constitution, we should understand the historic background also, sir. Was the independence. We won the independence 1947-49. The debate took place and country was partisaned. And in such a background, it was brought in just to preserve the unity and integrity of the country, not to gain political advantage by any political party. Yes. That is why, while paying tribute to Dr. Ambedkar, while we discuss a serious political constitutional matter, I urge upon all the political parties, and we should now resolve to stand up and say that Article 356 should remain as a dead letter, and democracy has to be preserved, and this constitution has to be upheld, and otherwise the democracy
I feel very sad and very concerned. Thank you. Our democracy will be in peril. Thank you, sir. थैंक यू। श्री दिलीप कुमार तिर्की जी। आज गवर्नर रोल हेल्दी डिस्कशन में मुझे कहने के लिए मौका दिया, इसलिए थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो छोटी छोटी पार्टी का सर टाइम काटा ना जाए सर। महोदय, आज जो चर्चा हो रही है ये हमारे देश के संविधान की सुरक्षा के लिए, हमारे देश का हित के लिए बहुत ही अच्छा है। हम चाहेंगे कि व्यापक रूप से चर्चा हो, क्योंकि 1950 से आज तक, जब से 356 एक्ट लागू हुआ है, तब से लेकर आज तक जितने भी छोटे छोटे पार्टी हैं इसके शिकार हुए हैं। महोदय, हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि सेंटर का राइट क्या है या स्टेट का राइट क्या है। हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल है। मैं कांग्रेस स्पीकर उनका भाषण सुन रहा था, मैं बीजेपी स्पीकर उनका भी भाषण सुन रहा था, लेकिन आज जो चर्चा होने जा रहा है इसमें मैं हमारा व्यू देना चाह रहा हूं, हमारा बीजेडी के व्यू देना चाह रहा हूं। यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर पर सवाल खड़ा हो गया है। यहाँ पर देखिए, गवर्नर के रिपोर्ट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सरकार का जो डिसीजन था वो भी पलट दिया। यहाँ पर इसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नर का रिपोर्ट में, गवर्नमेंट काम में कमी हुई है। सर, गवर्नर यदि ऐसे ही राज्यों में जहां चुनी हुई सरकार हैं, जहां बहुमत सरकार हैं, वहां यदि इस तरीके से तोड़ मोड़ के सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली हमारे जो भारत के संविधान का मैं कहूँगा नियम कानून तोड़ के हम बाहर जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी धूमिल करने जा रहे हैं, खराब करने जा रहे हैं। इससे फ्यूचर में आज अरुणाचल में हुआ, कल उत्तराखंड में, परसों हमारे उड़ीसा में होगा, कभी वेस्ट बंगाल में, इस तरीके से यदि होता रहा तो हमारी छोटी छोटी पार्टी डर डर के काम करेंगे। आपका उड़ीसा में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में? हाँ, काफी बार हुआ है, आपको अच्छी तरह मालूम है। हमारे उड़ीसा में काफी बार हो चुका है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम प्रजातंत्र देश में रहते हैं, लेकिन अब जो संविधान के रखवाले हैं, संविधान के जो सही दिशा में लेने वाले हैं, संविधान को बचाने के छोड़ के वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए सुंदर जो संविधान है इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, ये काफी दुख की बात है। गवर्नर पोस्ट एक उसमें उनका एक गरिमा होता है, एक संवैधानिक पोस्ट होता है। इसलिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में सरकार को भी ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में कहीं कभी गवर्नर हो इस तरीके से काम ना करे, जिससे कि वहाँ के जुड़ी हुई सरकार को तोड़ा जाए और एक सरकार बनाने की कोशिश किया जाए। लेकिन जैसे ऐसे बार बार गवर्नर का डिसीजन को जो कोर्ट या सरकार के जो डिसीजन को कोर्ट बार बार यदि इस तरह का कैंसिल करता रहा, इस तरह का यदि रिजेक्ट करता रहा, तो हमारे जनता में क्या मैसेज जाएगा? सर, खराब मैसेज जाएगा। आज भी आप देख लीजिए, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद खराब मैसेज जा रहा है। तो इसलिए महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी छोटी छोटी पार्टी हैं उनकी बात भी सुनी जाए। और आखिर में यही कहूँगा कि गवर्नमेंट का जो संविधान का जो लक्ष्मण रेखा है उसको कभी पार ना करते हुए काम करे, ताकि जो भी राज्य में जो सरकार चल रही है वो अच्छी तरह चल सके। धन्यवाद। थैंक यू। श्री टी.के. रंगराजन। So we are discussing today on the very important Article 356
which how it was applied in Arunachal and Uttarakhand, and the role of the governor. Even in the Constitutional Assembly, as mentioned by other speakers also here, much discussed subject, one of the subject was Dr. Ambedkar on 356. As you correctly pointed out when you speak, Article 356 to remain as a dead letter. But it doesn't, never, it always alive, and always acting. First it was used in 1953, not against Kerala. First it is used on East Punjab, Patiala East Punjab. It was used and it was dismissed. The second one is the much discussed dismissal state government under 356 was 1959 dismissal of the communist government EMS. First government elected in the world. It was dismissed. As Kapil Sibal correctly said, the Prime Minister knows it. In those days, the Prime Minister of India, the then Congress President, and the paper says, according to the papers, the CIA was very much interested to topple that government. Now let me go through this scorecard. Indira Gandhi government dismissed 50 occasions. Morarji did this 16 times. Manmohan Singh ji 12 times. P.V. Narasimha Rao 11 times. Jawaharlal Nehru 6 times. And Vajpayee and Chandrasekhar 5 times. Narendra Modi within 2 years 3 times. This is the scorecard. Nobody wants to understand the meaning of 356. That is completely misused. We celebrate Ambedkar Jayanti. This parliament has discussed about it. But in practice, every government, now they wanted to have a cooperative federalism. What is that cooperative federalism? Only God only knows. Sir, I would like to point out, after 1994, almost all states which had opposition governments faced this dismissal. Sarkaria Commission lengthy discussed. I objected and Venkayaji said, why do you read one portion? And Sarkaria Commission has given lot of ways to scrutiny. See, 9-member bench, Bombay judgment, went into details, well-known compulsory floor tests. If the center feels sometimes unconstitutional is going in state, give warning them and give 1 week and floor test. All these things has been said in Mumbai judgment, Sarkaria Commission. Now I will come to one point, very important point, that when Bombay judgment, after Bombay judgment, some governor wanted to dismiss that state. Then President, the first major impact of the Bombay judgment was felt in 1997 when President K.R. Narayanan returned the United Front government recommendation to impose president rule in Uttar Pradesh. A year later, he again returned the recommendation by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, BJP government to impose president rule in Narayanan in Bihar. Vajpayee wanted to impose president rule in Bihar. Narayanan in minutes against the Bihar recommendation, it's reported the condition precedent for inversion of Article 56, that there has been a failure of constitutional machinery in the state, has not been adequately made out by the governor. Secondly, it would be imprudent to take action against Article 356 in Bihar when preliminary steps such as warning, directive, other things, state has not been taken by the union. Thirdly, it said, the fact that the government headed by Srimati Rabri Devi enjoys the majority support in the legislature assembly
has to be borne in mind as per the Sarkaria Commission passage cited by Bommai judgment. This was K.R. Narayanan minutes. Sir, this is not followed by this present government. So your agent has become what you wanted. You don't want a Congress in this in the country. What you call is, there's a famous word. BJP version is Congress Mukti Bhaga. See, that is your agenda. That's why you send your RSS people. They have got only one agenda, only one party, that is BJP. There should not be any opponent. There may be small parties in ruling the state. So this is your agenda. Sir, what I wanted to mention finally, see, Tamil Nadu state was affected thrice. One under when Chief Minister MGR, twice under Karunanidhi. Kerala was affected. Andhra Pradesh, which state is not affected? Which state is not affected? We have to reach, there is any state where 356 was not used. Latest in the present government, unconstitutional efforts have their own government. Arunachal, worst example, misuse of 356. Assault on federal principle, this time governor calling emergency session in Arunachal, violation of all norms, no lesson was learned, and they talk about cooperative federalism. Thank you, Mr. Sir, make India a truly federal. Governor appointment today becoming a tools of the ruling party. If democracy want to prevail, such misuse to be stopped, I think the government will take proper lesson from this discussion. Thank you very much. Thank you. Sri Pradeep Tamtaji. Sir, मैं आपका आभारी हूँ. 1 second, your party time is exhausted, but Deputy Chairman has allowed 3 minutes to you. सर, मेडन स्पीच मेरी पहली स्पीच है सर. ये तो मेडन स्पीच होगा नहीं. मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया. जिस पर चर्चा हो रही है उसी राज्य से मैं हूँ और इस पूरे घटनाक्रम से पूरा हमारा उत्तराखंड राज्य कैसे प्रभावित हुआ, मैं पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा. मार्च के बाद अप्रैल मई जून ये 3 महीने हैं, ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमारी लाइफ लाइन के महीने हैं. 4 धाम यात्रा शुरू होती है, उसके बाद जून के बाद वैसी 15 जून के बाद बरसात का सीजन शुरू होता है. इन 3 महीनों में ही सब कुछ उत्तराखंड के लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था कमाई से लेकर सरकार को 4 धाम यात्रा से लेकर आने वाली आपदा से निपटने की भी तैयारी करनी होती है. जब हमारा उस समय जब ये बजट सत्र हो रहा था, मैं सुन रहा था, आदरणीय बैंकर जी ने कहा भी था कि हमारा संकट नहीं था, कांग्रेस का संकट नहीं था. मैंने शुरू से कहा जो उत्तराखंड में हुआ वहां पर जिस तरह से 356 आर्टिकल का प्रयोग किया, उसकी स्क्रिप्ट ना देहरादून में लिखी गई थी ना उत्तराखंड में लिखी गई थी, उसकी स्क्रिप्ट यही दिल्ली में लिखी गई थी. और जो नारा आप दे रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो स्क्रिप्ट के सारे लिखने वाले सारे एक्टर इसी दिल्ली में बैठे हुए थे. महोदय, 9 मार्च को प्रदेश असेंबली का विधानसभा सत्र शुरू होता है राज्यपाल के अभिभाषण से. हमारी सरकार राज्यपाल के अभिभाषण में अपना बहुमत सिद्ध करती है. 17-18 मार्च को विभागवार बजट आता है और आप सबको मालूम है एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग बिल, सबके अंत में उन विभागीय बजटों को एक जो पूरा मनी उसके लिए कि आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकला उसकी बात है. 17 तारीख को विभिन्न विभागों के बजट पास हो रहे हैं. 18 तारीख को 11 बजे विधानसभा का अधिवेशन शुरू होता है. सारे सदन में बैठते हैं. प्रतिपक्ष को मालूम है अगर उनको डिवीजन की मांग करनी थी किसी भी तरह की, सरकार अल्पमत में 11 बजे स्पीकर के सामने कह सकते थे. पूरा सदन चलता है, हर विभाग का बजट पास होते हैं. वो मंत्री भी अपने विभाग का बजट पास करवा लेते हैं जो आज इनके हम राई है. सरकार की तारीफें करते हैं
कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार, किस तरह से कृषि विभाग आगे बढ़ रहा है। बजट पास होता है और जब सारे बजट पास हो जाते हैं और उसके बाद पूरा सदन ध्वनि मत से सारे कुछ पास हो रहे हैं और उसी तरह अप्रोप्रिएशन बिल भी ध्वनि मत से पास होता है। यह पूरी दुनिया में संसदीय परंपरा है। सदन का मूड क्या है, सदन की राय को ही जानकर, सदन के मूड को देकर स्पीकर अपना निर्णय लेते हैं और उसी आधार पर सदन का अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ और स्पीकर चले गए। उसके बाद जो सारा दृश्य पैदा होता है, मैं पूछना चाहता हूं, वो तथाकथित 9 विधायक और बीजेपी के विधायक अचानक कहते हैं हमको डिवीजन हो गया, जब विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है कि डिवीजन मांगते हैं। बाहर चार्टर बस खड़ी होती है, एसी बस आ जाती है, गवर्नर के वहां जाते हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई है। हम 9 विधायक यहां पर हैं, वहां हंगामा करते हैं। उसके बाद रात के 1:30 बजे वहीं पर चार्टर विमान आ जाता है, चार्टर विमान से दिल्ली में आ जाते हैं, गुड़गांव के 5 स्टार लीला होटल में रखते हैं। आखिर अचानक क्या एसी बस अचानक आ गई? क्या वो चार्टर विमान अचानक आ गया? ये एक साजिश थी और इसी साजिश का नमूना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे प्रभारी हो या मध्य प्रदेश से इनके राष्ट्रीय महासचिव हो, वो आते हैं, वो सब इनको हाँक करके राज्यपाल के, गवर्नर के वहां ले जाते हैं, दिल्ली लाते हैं और यहां तमाशा करवाते हैं। गवर्नर के सामने सारी रिपोर्टें थी जब ये गए कि गवर्नर की नहीं, सरकार अल्पमत में आ गई है। दूसरे दिन गवर्नर ने विधानसभा से भी सदन की सारी कार्रवाई मंगाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी जाते हैं। सारी सामग्री के बाद जब गवर्नर संतुष्ट हो जाते हैं, सरकार को 28 मार्च को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं। गवर्नर अपनी रिपोर्ट 19 तारीख को देते हैं राष्ट्रपति महोदय को। कहीं इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई है और उन्होंने खुद कहा है कि एप्रोप्रिएशन बिल में स्पीकर का निर्णय फाइनल होता है। ये परंपरा है, ये कोर्ट है, ये न्यायालयों के निर्णय है। और उसके बाद राज्यपाल हमको 28 तारीख को सरकार को बहुमत सिद्ध करने अधिकार देते हैं। उसके बाद ये गवर्नर के ऊपर दबाव डालते हैं दिल्ली की सरकार, अरे हमने तो तुमको इसलिए भेजा था कि कांग्रेस की सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराओ, तुम ये क्या रिपोर्ट दे रहे हो? और उसके बाद गवर्नर पर दबाव बनवा करके फिर गवर्नर से चिट्ठी लिखी जाती है कि जल्दी करो, जल्दी करो। जबकि स्पीकर ने विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया था। स्पीकर ने 28 मार्च को दोबारा विधानसभा के सत्र को बुलाने का उसी समय स्थगित करते हुए निर्देश दिया था और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा गवर्नर साहब से कि 28 मार्च को विधानसभा बैठ रही है और मैं उसी दिन अपना बहुमत सिद्ध करूंगा और राज्यपाल ने भी उसको माना। उसके बाद जिन विधायकों जो कहे ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कोई अप्रोप्रिएशन बिल के डिफेक्शन के आधार पर स्पीकर ने नहीं निकाला उनको। ये देश के ये दल विरोधी विधेयक का 10th शेड्यूल का निर्णय है जो इसी देश की संसद ने पाला कि चुनी हुई सरकारों को लोग धन बल के जम पर न गिरा सकें। स्पीकर को अधिकार दिया था और उसमें पहला एक जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो आधार है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देता है वो भी एंटी डिफेक्शन के दायरे में आता है। और ये स्वेच्छा का निर्णय उन्हें कहा रिजाइन नहीं, और उसी आधार पर ये स्वेच्छा से थी। कांग्रेस के 9 विधायक गवर्नर के पास जाते हैं, 27 बीजेपी के विधायकों के साथ जाते हैं, उनके पैड में अपने हस्ताक्षर करते हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई है, इसको बर्खास्त करो। क्या ये कांग्रेस को कोई विधायक कहेंगे कि हमारी पार्टी को बर्खास्त करो? और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि अगर व्यक्ति वॉलंटरी एक्शन के द्वारा अपनी पार्टी से को छोड़ देता है वो भी एंटी डिफेक्शन के दायरे में आएगा। और हमारी पार्टी ने स्पीकर से अनुरोध किया और इसी आधार पर कि ये लोग स्वेच्छा के आधार पर पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए ये दल विरोधी कानून के दायरे में आते हैं और इनकी सदैव भंग की जाए। स्पीकर ने तमाम संवैधानिक परंपराओं के आधार पर अपना निर्णय दिया है। लेकिन मुझे तो बहुत तजुर्बा आश्चर्य है कि जब 26 तारीख को 28 तारीख को विधानसभा में हम अपना निर्णय सरकार सिद्ध करने जाती है, 26 की रात को कैबिनेट बुलाई जाती है, प्रधानमंत्री कहीं दूसरे राज्य से आते हैं, रात में बैठक होती है। और कहा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि स्पीकर ने
दोहरा आचरण किया कि कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी और बीजेपी के एक दूसरे विधायक की सदस्यता समाप्त नहीं की। ये इश्यू ही नहीं था। मैं ये आप सबके सामने, देश के सामने कहना चाहता हूं कि इनके अटॉर्नी जनरल ने भी हाई कोर्ट में कहा कि स्पीकर के दोहरे मापदंड थे कि कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता समाप्त की और बीजेपी के विधायक की समाप्त नहीं की। और फैक्ट क्या था? बीजेपी ने अपने विधायक की सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पीकर के पास कोई प्रत्यावर्तन भी नहीं दिया था। वो 5 अप्रैल को देते हैं और देश की संसद और देश की कैबिनेट 26 तारीख को एक आधार ये भी लेती है कि स्पीकर पार्टीशन है। कैसी सरकार चल रही है? कैसे अटॉर्नी जनरल है जो हाई कोर्ट में कहते हैं और जब हमारे लॉयर ध्यान दिलाते हैं तब हाई कोर्ट से माफी मांगते हैं, उस फैक्ट को विड्रॉ करते हैं। पूरी तरह से 356 का जो दुरुपयोग किया उसको देश ने देखा है। हमको 28 तारीख को उसके बाद हमको मौका नहीं दिया गया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। हम हाई कोर्ट में गए, डिवीजन बेंच ने 31 तारीख को फिर हमको मौका दिया। वहां पर फिर सरकार को जब केंद्र के सरकार मुंह की खानी पड़ी, फिर ये डबल बेंच में गए। डबल बेंच ने भी कहा कि नहीं, गलत हुआ है, 356 आर्टिकल का दुरुपयोग हुआ है। ये केंद्र सरकार के अंदर बने जुडिशियल रिव्यू का रिव्यू हो सकता है, ये बाहरी कानून ये पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। और उसके बाद केंद्र की सरकार की सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां से भी जो फैसला हुआ। लेकिन मित्रों, जो दुरुपयोग हुआ, जो धन बल के द्वारा, आज हमसे कहते हैं कि हमारी सरकार में पार्टी में छेद था। हमारी पार्टी में कहां छेद था? आप लाए थे धन पशु को 3-3, 4-4 दिन तक देहरादून के होटलों में लोगों ने देखा है। आपके बड़े बड़े अधिकारी लाए थे, आपकी चादर बसा आई थी, आपके चार्टर प्लेन आए थे, 9 दिन विधायक लोग यहां घूमे। वो कौन था उसके पीछे? क्या हमारी पार्टी के लोग थे या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो कह रहे थे कि हमको हर हालत में इस सरकार को गिराना है? हमने क्या कौन सा दुरुपयोग किया? क्या हमारी स्पीकर के ऊपर माननीय मंत्री जी ने नोट करते हुए कहा स्पीकर के निर्णय पर रोल होता गवर्नर पर? क्या यहाँ तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो गवर्नर ने पहली रिपोर्ट में भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात नहीं की थी। तो खुला आम उत्तराखंड के अंदर क्या हो? और उसके बावजूद भी जब हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आधार पर फ्लोर टेस्ट में हम पास हो गए, हमारी फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद हमारी सरकार आई और इन्होंने हमसे कहा हमारे हाथ पांव खोल दिए गए। ये कौन सा निर्णय है कि देश की स्पीकर, मनी बिल में कहा जाता है, हमारे हाउस के नेता सदन ने कहा, हमारे हाउस के नेता ने कहा कि मनी बिल में फैसला लोकसभा के स्पीकर का होगा, उस पर कोई डिस्कस नहीं होगी। और वही सदन के नेता उत्तराखंड के स्पीकर के सवाल पर सवाल उठाते हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों? देश की तमाम विधानसभाएं कहती है, देश का कानून कह रहा है, संविधान कह रहा है कि स्पीकर का फैसला सदन के अंदर होने वाली तमाम कार्यवाहियों के लिए स्पीकर का फैसला अंतिम होगा। राज्यपाल की पहली रिपोर्ट भी कह रही है, इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। स्पीकर ने कहा है उत्तराखंड का स्पीकर का फैसला जो होगा आपके अनुकूल नहीं होगा, आप उस पर आरोप लगा देंगे और एप्रोप्रिएशन बिल पास दिया, उनको कटघरे में खड़े करेंगे। और वही दिल्ली के अंदर स्पीकर जो लोकसभा में होंगे, यहाँ पर आप उसी के आड़ में अपने मनी बिलों को बचाएंगे। ये दोहराना। तो संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? आर्टिकल 356 को कौन तोड़ मरोड़ कर रहा है? ये मोदी की सरकार है जिसने कहा था हम देश के अंदर संविधान, हम क्या कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, ये हिमालय जैसे छोटे राज्यों के साथ हो रहा है, ये दलितों के साथ हो रहा है, ये अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। जब से ये सरकार आई है, वो देश के वो तमाम लोग जो पीड़ित है, वंचित है, उनके ऊपर से तरह तरह से हमले हो रहे और हमारे ऊपर उत्तराखंड की सीमा की सरकार पर भी ये हमला हुआ। हमको देश की न्यायालय ने मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारी सरकार को जब देश की सुप्रीम कोर्ट की पुनर्जीवित हुई, लेकिन देश के न्यायालय ने, हमने वहां के गवर्नर ने कहा था मुझे दिशा निर्देश किया जाए
गवर्नर ने यह नहीं कहा था कि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ। गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी थी, अप्रोप्रिएशन बिल स्पीकर के अनुसार पास हो गया, दिशा निर्देश दिया जा, और 2 महीने तक वहां के बजट को पास नहीं माना गया। 2 महीने जून के अंत तक, और हमको स्पेशल फिर विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2-2.5 महीने उत्तराखंड का जो विकास रुका, जो आपदा से लड़ने के लिए जो सरकार तैयारी कर सकती थी वो रुकी। उसके लिए उत्तराखंड की जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। देश की जनता देखेगी जो 356 का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको न इतिहास मांग करेगा, न देश की जनता मांग करेगी, न उत्तराखंड की जनता मांग करेगी। धन्यवाद। Sit down. Now please, Srimati Kanimodi, last speaker. Kanimodi ji, 3 minutes. 1 minute? No, take 3 minutes. Yeah. Yeah. LOP says give 5 minutes. Okay, 5 minutes. Thank you, sir. So what has happened in Arunachal and Uttarakhand, it's a shame on our democracy. Our Prime Minister is going all over the world, meeting people, meeting heads of nations, addressing people there. But if this happens in our own country, it is definitely bringing so much shame to our democracy and to the people who've actually elected these governments. Sir, this Article 356 has been time and again used as an instrument, as a weapon against opposition parties and voices which are against the central government. Our party, the DMK, and our leader, Dr. Kalengar, Karunanidhi, and our party leaders have consistently been fighting against using Article 356, and we've been fighting to remove Article 356 from the Constitution. The founding fathers did not think that this article will be misused to this extent. Dr. Ambedkar actually wanted it out of the Constitution, and he said that it should remain a dead letter. Sir, out of 115 times which this Article 356 has been used, it has been used by the government and the principal opposition party. And we, the people in between, here, in the middle, are the people of India. No, the people who are sitting in between the opposition party and the ruling party are the ones who've been affected time and again by it, and we are the ones who are actually really fighting against this. Because it's mostly been our governments which have been dismissed, and the DMK government has been dismissed twice. Yes. Yes. Yes, I'm not denying it. Yes. So Tamil Nadu, Yes. there have been 3 governments. Yes. Tamil Nadu, At least in this matter, you both parties are the same. we did not get anybody dismissed. Okay. So, sir, out of the 115 times, 107 times it's been dismissed by the government and the principal opposition party. And I think this article is against democracy. And so when a state elects its representatives, its government to rule it, what right does the central government or the governors have to overrule what the people have decided? This is against democracy. It is against the people of this country. And I think DMK will continue to fight to remove Article 356 from the Constitution. And sir, it is time to think whether we need the post called governors for the states. It is time we have to rethink this, or at least we have to think about what the powers which they are going to hold. I think it is a very important juncture, and we have to really sit and redraft what the powers of the government, the governors in the states are going to be. Thank you. Thank you very much.